Friends, how are you? Friends, welcome back to my channel Quick English. My dear friends, आज आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगी। आप इंग्लिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हो, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी आप इंग्लिश क्यों बोल नहीं पाते हो। लेकिन आपको बताता हूँ, आप परेशान मत होइए। देखिए, ये आपका जर्नी है। जैसे आप हिंदी हो या और कोई रीजनल लैंग्वेज बचपन से यूज करते हो, वैसे ही आप इसको उस तरफ लेंगे तो आप अच्छी तरह से बोल पाओगे। लेकिन आप पर्सन होंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसीलिए आपके लिए आज एक प्रोडक्ट लाया हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप जानते हो, लेकिन आप यूज करते हो नहीं करते हो मुझे पता नहीं है। लेकिन वो प्रोडक्ट आपको आपकी इंग्लिश जर्नी के लिए थोड़ा सा मदद करेगा, और आपका जो इंग्लिश जर्नी में आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए वो प्रोडक्ट लाया हूँ। वो प्रोडक्ट का नाम पता करने से पहले आपको बताता हूँ। आप पहली बार आए हो, मेरा चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। इस तरह का जानकारी पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप बचपन से जैसे हिंदी बोलते हो, उसी तरह आप इंग्लिश को बोलने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप टेंशन लोगे तो आप उस जर्नी में सफल हो नहीं पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए, आप जब बचपन से हिंदी या और कोई रीजनल लैंग्वेज सीखते हो, आपको कोई नहीं सिखाता है। आप जैसे ऑटोमेटिक सीखे तो उसी तरह तो आप आसानी से उसको हासिल कर पाओगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेते हो। आप कैसे इसको सीखोगे, कैसे बोलोगे, कौन मदद करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक जर्नी है। आप लोग ज़्यादा टेंशन लोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, आपके लिए एक प्रोडक्ट लाया हूँ। आप जब प्रैक्टिस करते हो, आप जो प्रैक्टिस करने जाते हो, आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा मदद करेगा। वो प्रोडक्ट का नाम है गूगल ट्रांसलेट। माय डियर फ्रेंड्स, I know that product is a one type of product of Google. If you can use this product in your practice session, absolutely that must help you to grow in your journey, and you can start speaking in English language. I know when you are going to discuss more in English language, absolutely you are facing so many obstacles, but don't worry. When you can get any difficult word, absolutely you just go and search in that product, in that Google Translate. Absolutely you must get answer by the using of that. And you have to do for the long time. My dear friends, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, आपको पता नहीं वो इंग्लिश में वो क्या होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाइए और डायरेक्टली सर्च कीजिए, एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉपर इंग्लिश वर्ड ऑफ दैट रीजनल लैंग्वेज। आफ्टर गेटिंग दैट, you may be used in your conversation, you may be used in your practice session, and you have to do for the long time. That's why I choose this product for you. That must help you in your journey, because you are not getting any idea actually what you can do best for this thing for your English journey. That's why I choose this product for you. Either you use this product or not, I don't know, but
I must recommend you must use this product while speaking. Whenever you are going to discussion in English, you just use that product, and that must help you in your English journey. My dear friends, don't take any stress. You just do your duty in the proper way. Don't hope any result when how you can get success in your life and you can enjoy life. That's why God always saying that you just do your duty. Don't hope for any result. Result automatic coming towards you. You should not take any stress. If you take any stress for these matters, afterwards you will be stuck. You can do more for that. That's why I am telling. Don't take any stress. Don't worry about this point. What is happening in your life? You just welcome that. Either you do mistake, you just welcome that. Because this time is a learning time for you. How much you can do mistake, that will be solved later. By the using of your idea, by the using of Google Translate, or by the using of Google. Whatsoever you can do, it's depend on you. But in the beginning stage, you should not take any stress. How can you fulfill your desire? How can you speak well in English? My dear friends, this is the tips for you. I think you can understand it very well, and I hope you must apply this trick for your English journey. Because if you think more about this point without any effort, after how can you get success? That's why I am telling, don't take any stress. You just do your duty in the proper way. And when how you can get success, it's depend on your effort. How much you can do more effort for these things, it's depend on your hard labor. Don't take any stress. Don't overthink about this point when how you can speak well in English. How much you can do more practice. How can you do more effort for these things. Success automatically come towards you. That's why I am telling, don't take any stress. Don't overthink about this point when how you can get and achieve this thing. You just do your duty. Don't hopeless for these little bit things. I know, though you are beginner, in the beginning stage, you are losing your heart for these little things, and you have not interested for doing more for this thing. So don't take any stress for the matters. It must happen because you are a beginner. You don't know actually how can you start your journey in the beautiful way. That's why that problem coming towards you for irritating you. So don't frustration for these little bit things. What is happening in your life, just welcome that, and you must face that. Then you can achieve whatever you want in your life, and you can start speaking in English language. My friend, this is the tips. I think you can understand it very well. I hope you must apply this thing in your journey also. So thank you all the best.